Welcome back to Tide and Loam. I am your instructor Hassaan, and in this video we are going to study one of the most important organelles of the cell called mitochondria. Mitochondria is extremely important to the cell, not only to the cell but to the whole body of an organism. It is the powerhouse of the cell. ये सेल का पावर हाउस है एंड इट प्रोड्यूसेस एनर्जी. हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसके लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर है दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द पावर हाउस ऑफ द सेल कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया. सो ऑल द एनर्जी दैट वी यूज टू डू ऑल द एक्टिविटीज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है एंड इट इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल. ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, ये फंजाई प्लांट एनिमल्स में मौजूद है बट इट इज एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल्स. नाउ हियर वी हैव अ फिगर ऑफ द सेल. और सेल के अंदर दिस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर विच वी हैव, दिस इज द मैग्निफाइड इमेज ऑफ दैट स्ट्रक्चर एंड इट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया. सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. जस्ट लाइक पावर हाउस ऑफ द सिटी, mitochondria is the powerhouse of the cell. What is function of mitochondria? Mitochondria produces energy. Mitochondria energy बनाता है by performing reactions of aerobic respiration. Mitochondria reactions of aerobic respiration perform करता है जिसमें oxygen is used to break glucose which is actually food to release energy in the form of ATP. नाउ माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है एनर्जी बनाना. और माइटोकॉन्ड्रिया अपना ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है? माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म्स दिस फंक्शन थ्रू द रिएक्शंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इन एरोबिक रेस्पिरेशन द फूड विच इज ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन यूजिंग ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को यूज करते हुए ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है एंड अल्टीमेटली एटीपी इज प्रोड्यूस्ड विच इज सेल्स एनर्जी करेंसी. सेल के अंदर एटीपी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. सेल के अंदर एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है. जस्ट लाइक इनसाइड अ पावर प्लांट हाइड्रो पंप वाटर इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी. इन द सेम वे इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया food is broken down using oxygen and this process is called aerobic respiration which produces energy. So mitochondria is the powerhouse of the cell and it produces energy through aerobic respiration. Next we will study the structure of mitochondria. सबसे पहले mitochondria की outer surface which is a double membrane. So mitochondria is bound by a double membrane and the outer membrane is smooth. This is the figure of the mitochondria and this ये जो outer membrane है, golden color outer membrane, orange color outer membrane, this is the outer membrane and it is smooth. So double membrane में जो outer membrane है वो smooth है and inner membrane is not smooth. As you can see here, this is inner membrane and it is not smooth, it is forming folds. These folds are called cristae. You know these golden colored folds, these are called cristae. So माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में डबल मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन जो है दैट इज स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन फॉर्म फोल्ड्स और दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस क्रिस्टी? द फंक्शन ऑफ दिस क्रिस्टी इज टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन. अब सेल में एनर्जी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन के रिएक्शंस परफॉर्म करता है और उन रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए लार्ज सरफेस एरिया चाहिए और इन फोल्ड्स की मदद से सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सरफेस एरिया बढ़ जाता है और रिएक्शन ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किए जा सकते हैं. दिस इज द सोल पर्पस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टी. इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन. एंड inside outer and inner membrane, actually inside double membrane this is the fluid, ये जो bluish fluid है and this fluid is called matrix. जो mitochondria का fluid it is called matrix. It is inner fluid like material of mitochondria and it is present inside cristae. So this is outer membrane, this is inner membrane and inside inner membrane this fluid is called मैट्रिक्स. अब इसकी कंपोजिशन क्या है?
The first thing in its composition is a circular DNA. As you can see here, these circular DNA, this is present in matrix and ribosomes. So राइबोसोम सेल के अंदर भी प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ अटैच्ड है, न्यूक्लियस की सरफेस के साथ अटैच्ड है, एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया. So ribosomes are present inside mitochondria and mitochondrial ribosomes are of the same size as prokaryotic ribosomes. हमने राइबोसोम्स के टॉपिक में पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स यूकैरियोटिक राइबोसोम्स से छोटे होते हैं. सो सेल के अंदर जो राइबोसोम्स होंगे वो बड़े होंगे, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स होंगे वो छोटे होंगे और उनका साइज बिल्कुल प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जितना ही होगा. सो मैट्रिक की कंपोजिशन में दो चीजें हैं, डीएनए एंड राइबोसोम्स. What is the function of matrix? Serves as a site for aerobic respiration. क्रिस्टी का फंक्शन है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, और एरोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअली कहाँ टेक प्लेस करती है? एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शंस एक्चुअली परफॉर्म होते हैं मैट्रिक्स में. एंड दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस. Let me revise the whole structure of the nucleus with this magnified image. First of all, this outer structure, this outer membrane this is the outer membrane of mitochondria. ये जो golden structure है, this is outer membrane of mitochondria, और inside this more yellowish golden structure which are forming folds. These folds are called inner membrane, and these folds have a particular name of them which is called cristae. Inner और outer membrane के inside, inner और outer membrane के दरमियान actually there is a space which is called intermembrane space, as you can see here. And inside inner membrane there is a fluid which is called matrix. और matrix में we have ribosomes, these small particles are ribosomes, and these circular structures, these are DNA. ये mitochondria के अंदर circular DNA है. And these white structures are ATP synthase particles which are called as enzymes. So you don't have to worry about this name. माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में सबसे पहले एक डबल मेम्ब्रेन है. इनसाइड डबल मेम्ब्रेन देयर इज अ फ्लूइड व्हिच इज कॉल्ड मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में राइबोसोम और डीएनए. एंड दिस कंक्लूड्स आवर टुडेस लेक्चर. थैंक यू फॉर वाचिंग.